वेलकम बैक गाइस। तो आज हम देखने वाले हैं HTML के बारे में, क्योंकि हमें कुछ प्री रिक्विजिट चाहिए जब जावा एडवांस के लिए। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में देखा SQL और SQL के बारे में कि SQL हमें क्यों नीड है। तो वैसे ही HTML और CSS एक ऐसी लैंग्वेजेस है जो कि हमें नीडेड है एडवांस जावा के लिए। तो देखते हैं आज हम ओवरव्यू ऑफ HTML। तो HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि एक मार्कअप लैंग्वेज है जो कि वेब स्ट्रक्चरिंग के लिए यूज होती है। एंड इट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड लैंग्वेज टू राइट वेब पेजेस, यानी कि अपने कोई भी वेब पेजेस हो, यानी कि वेबसाइट्स हो, उसका कोड या उसकी पेजेस राइट करने के लिए HTML लैंग्वेज यूज होती है। हाइपर टेक्स्ट refers to the way in which web pages, यानी कि HTML documents are linked together. Thus, the link available on a web page is called hypertext. यानी कि जो भी कोई लिंक होती है वेब पेज पर उसे हम क्या कहते हैं, हाइपर टेक्स्ट। As its name suggests, HTML is markup language, which means you use HTML to simply mark up a text document with tags that tell a web browser how to structure it to display. मतलब HTML के अंदर कुछ टैग्स होते हैं जैसे कि H1, H2, there are multiple tags, p tag, paragraph tag, heading tags, semantic tags. There are different type of tags in HTML that structures the web browser, our web page, that how to structure our web page to display. Originally, HTML was developed with the intent of defining the structure of documents like headings, paragraphs, lists, and so forth, to facilitate the sharing of scientific information between researchers. तो HTML किसके लिए डेवलप की गई थी? टू स्ट्रक्चर द डॉक्यूमेंट, जैसे कि उसमें हेडिंग टैग होते हैं, पैराग्राफ, लिस्ट होते हैं, to for sharing the scientific information between researchers. To learn HTML, you will need to study various tags and understand how they behave while formatting a textual document. Learning HTML is simple, as users have to learn the uses of different tags in order to format the text or images to make a beautiful web page. अब यहाँ पर हम अब देखने वाले कि ये डॉक टाइप डिक्लेरेशन क्या होता है। HTML के अंदर जो स्टार्टिंग टैग है डॉक टाइप डिक्लेरेशन। तो डॉक टाइप डिक्लेरेशन टैग इज यूज्ड फॉर द वेब ब्राउजर टू अंडरस्टैंड द वर्जन ऑफ द HTML, यानी कि हमारे HTML का जो वर्जन है, HTML5 है, कौन सा वर्जन है, इसके लिए ये डॉक टाइप डिक्लेयर किया जाता है, यूज्ड इन द डॉक्यूमेंट। Current version of HTML is 5 and it makes use of the following declaration like that. There are many other declaration types which can be used in HTML document depending on what version of HTML is being used. We will see more details of this while discussing doc type tag along with the other HTML tags. तो हम आगे चल के देखने वाले हैं कि इसके साथ और कुछ टैग्स कैसे यूज कर सकते हैं। तो एक सिंपली HTML का प्रोग्राम है ये। Now HTML is being widely used to format web pages with the help of different tags available in HTML language. This is the simple basic document of HTML page. Here our main is doc type tag, which refers the version of HTML, and this is our main tag, root tag HTML, and in that root tag there are two child tags. One is head tag and another is body tag. In head tag we have some metadata like title or website title, and in body tag we have different tags like H1 tag, this is a heading, and this is paragraph tag, like that. And this is opening tag, and this is closing tag. And what's the difference between opening and closing tag? There is a slash difference between, in closing tag and or ending tag there is a slash suffix of every tag, prefix. So if we type this code in our document page and run it on any browser, we will get this output. This is heading, and this is ABC cat center. This is the heading we will give. This is the title, like that we will give to our HTML page, and this is heading which is in H1 tag, and this is our paragraph tag.
Like that, there are different types of tags in HTML. We will see in the next lecture.